Okay, so very good morning everyone, and in previous classes we have learned some conversions of measurement of length, weight and capacity, and we are revising the chapter. That means we are doing the miscellaneous exercise and value based questions of the chapter. Okay, so till question number 1, 2 and 3 we have discussed yesterday, wherein some conversions are there. So till question number 3, if anyone having any doubts, you can ask quickly in chat message. तो chat message में just you have to write the question number if you are having doubts in. आपको अगर कोई भी question में doubts है from the miscellaneous exercise, you just need to write the question number. Okay. So quickly write the question number. अगर किसी को है, if you don't have, you can write no as like Deepika has written. Okay, so Deepika don't have any doubts. Rest of all, जिसको भी जो कुछ doubts है तो बताएं. Okay. So till what we have discussed, let us do a quick revision about the ME of the chapter number 10 we are doing. Okay, so question number 2 we have done, that is conversion to kiloliter into liters. So for example, I am taking another questions with suppose 7430. This is in liters, and I want to convert this. I want to convert this into kiloliter. Then what we will do is we will just separate it out the thousands places and the rest of all remaining numbers. So here we have 7,000. So we can write this as like 7,000 liter plus the remaining 430 liters. So 430 liters. So these two value we can write. So we know 7,000 liters means if we want to convert into kiloliter. So 1,000 liter is 1 kiloliter. So 7,000 liter will be 7 kiloliter, and remaining 430 we will write here. So 430 liters. So this is what we have learned yesterday, how to convert liters into kiloliters and liters, and another how to convert meter, centimeter and millimeter. So if we are talking about the third question which we discussed is the conversions of meter, millimeter and centimeter. So suppose I am taking one of the another examples. It is suppose 7428. This is in millimeter, and we want to convert this as meter, centimeter and millimeter. So first most important thing is we know that 1000 millimeter is 1 meter. So first we will separate it out the thousands places. So here we have 7,000 millimeter. Plus now we will separate it out into tens. So tens में हमारे यहाँ पे 42 tens है. So 420 we will write, because we know that 10 millimeter is equal to 1 centimeter, and this will be in millimeter. Plus remaining we have is 8. So 8 millimeter. So now we can convert this as like 7,000 millimeter will be 7 meter, and 42 tens millimeter will be 42 centimeter, and remaining 8 will be 8 millimeter. So this is what we can convert into millimeter into meter, centimeter and millimeter. So till this much we have learned. Okay, so now further what we have is how to add and how to subtract. So addition and subtraction is also same as like the normal addition and subtraction only. Okay, so let us see some addition and subtractions, that is question number 4, 5 and the further some word problems also related to this chapter. So word problems are the best thing or important things. Why? Because these are the only practical use of the mathematics. Okay, so first let us discuss some questions from question number 4, wherein it is asking find the sum of. So sum of means you have to add. So find the sum of. Let us take any one. I am taking the third one only. So third question I am taking, wherein 11 meter is there, 22 centimeter. This is one value. Another is 8 meter and 25 centimeter, and one more we have is 9 meter and 18 centimeter. So these are the values which given
Except Deepika, rest of all has stopped the video. I will throw out all the students from the class and telling whoever is stopping the video. No one will stop the video. Start your video, everyone. I don't know what is the problem with you all. थोड़ा सा ये कर दो तो वीडियो बंद हो जाता है लोग का. अभिनव राज, having some problems. I know, but you resolve your problems. I don't care. But no one should be stop the camera. किसी का भी कैमरा बंद नहीं होना चाहिए. Okay. So these are the three values which it is given and it is asking to add. So this one, and this one. So first of all, we will write or we will arrange. Okay. So first, let us do in rough. It is asking to add. So you can just first write like this, this plus that. So how we will add here is the meter and centimeter. So in meters place we have 11. So 11. In centimeters place we have 22. So 22. In meter place we have 8 and then 25 and then 9 and 18. Now we will add. Okay. So 5 plus 2 is 7. 7 plus 7 to are 14. 14 plus 1 is 15. So 5, 1 carry. Okay. So 2 plus 2 4 plus 1 5 plus 1 6. Okay. So 6. So 65 in centimeter and then 8 plus 1 is 9, 9 to are 18. So 8, 1 carry is 2. So 28 meter and 65 centimeter. So the sum is coming 28 meter and 65 centimeter. So 28 meter and 65 centimeter will be the required answer. So very easily this is how first we will arrange and then we will add. Tripti and Aditya Raj. सृष्टि, नाउ आई विल नॉट टेल एनीथिंग आई एम टेलिंग. अभी डायरेक्टली हम रिमूव कर देंगे क्लास से और ऐड भी नहीं हो पाएगी फिर. ओके, सो दिस मच अंडरस्टूड एवरीवन हाउ टू ऐड और हाउ टू फाइंड द सम. कैसे हम लोग सम निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं. वेरी सिंपली आई एम गिविंग टू ऐड वन ऑफ द क्वेश्चन. So do by yourself and tell the answer, everyone. So values I am changing here. So this you need to do by yourself. आपको अपने से बनाना है और बताना है आंसर इन चैट. प्राइवेट चैट में बताएंगे आंसर. ओके, सो 15 मीटर 28 सेंटीमीटर, देन 7 मीटर and 54 centimeter. And then 128 meter and 3 centimeter. So you all have to add this and tell the answer. Quickly add this and tell me the answer. जल्दी से इसको ऐड करिए सभी और इसका आंसर बताइए. So it's very simple. 15 meter 28 centimeter, then 7 meter and 54 centimeter. And 128 meter and 3 centimeter. So quickly arrange these all and find the sum and tell me the answer. जल्दी से ये सारी चीज को सबको अरेंज करके आंसर निकालिए. Okay, the values are very easy. 15 meter 28 centimeter, then 7 meter and 54 centimeter, and another one is 128 meter and 3 centimeter. So I have written in the message also for your convenience. So everyone find the sum and tell me the answer. So मैंने मैसेज में भी आप लोग को लिख के दे दिया है ताकि आपका इजी हो देखने में. सो इसको अरेंज करने हैं और आंसर निकालने हैं. सो सबसे पहले तो यहां हम लोग अरेंज करेंगे. लेट मी सी हु कैन आंसर फर्स्ट. सो मीटर एंड सेंटीमीटर. सो इन मीटर वी हैव 15, इन सेंटीमीटर वी हैव 28, then in meter we have 7, centimeter we have 54. Now here the most important thing,
In centimeter we have 3 only, so here there will be no any number, so it will be remain blank. And then 128 we have, so 8 will be here, then 2 will be here, and 1 we will write here. Okay, so now we will add this. अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे. Still I cannot see that anyone answered. अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं किया है. So let us see still who can answer first. So यहाँ पे 8 plus 4 is 12. Then 12 plus 3 is 15. 15 का 5 हो जाएगा 1 carry. So 1, 2 plus 1 is 3. 3 plus 5 is 8. So 85 centimeter coming. So now 7 to our 14 plus 1 is 15. 15 plus 5 is 20. So 20 का 0, 2 carry. Okay, 2 carry, so 2 plus 2 plus 1, 2 plus 2 4 plus 1 is 5, and 1 is it is. So 150 meter and 85 centimeter. अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, मतलब no one is trying at all. कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हो. So 150 meter and 85 centimeter. अरेंज करके देने के बाद भी आप लोग नहीं कर रहे हो एडिशन, दैट मींस एडिशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? प्रिंस राज हैज आंसर्ड बट योर आंसर इज नॉट करेक्ट. दैट मींस यू माइट नॉट अरेंज प्रॉपर्ली. आपने अरेंज इस तरह से नहीं किया होगा, सही से अरेंज करना है, ठीक है? तो यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेनेवर यू आर अरेंजिंग द नंबर शुड बी लाइक दिस. इस तरह से होना चाहिए. इन मीटर प्लेस वी विल राइट द नंबर्स रिलेटेड टू द मीटर, and in centimeters place we will write the numbers related to the centimeter. Okay, so board is visible to everyone. खुशी का भी आंसर सही नहीं है. 150 आ रहा है आंसर. ओके, 150 आ रहा है. 15 कैसे आ जाएगा? ये सारा को ऐड करना है. आप सिंपली देख सकते हो 128 मीटर है, तो 15 आने का चांस ही नहीं है. एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि 120 प्लस 7 प्लस 15 मिला के 15 थोड़ा ना होगा, ठीक है? तो एडिशन में नंबर अरेंज करना सीखो. नंबर यू हैव टू अरेंज प्रॉपर्ली, देन ओनली आंसर विल बी करेक्ट. 135, हाउ 135 इज कमिंग अभिनव? 135 कैसे आ जा रहा है? यहाँ पे तो 2 कैरी भी तो है. यहाँ से 2 कैरी गया तो उसको ऐड नहीं किए हो तुम. सो 2 कैरी करोगे तो 5 हो जाएगा, 150 हो जाएगा. यहाँ पे 20 हो रहा है ना. 7 to 14, 15. 15 plus 5 is 20. 20 is 0, 1 carry. Okay. Yes. So that means I have to give one more because you all are doing mistakes. चलिए मैं और एक देता हूं एडिशन करने के लिए. एडिशन में भी गलती कर रहे हो. That should not be. So I am giving total question. I am writing again. So the question is 145 meter 20 centimeter, then 30 meter 4 centimeter. Okay, do for these two value only. ये दो वैल्यू का ही आपको ऐड करना है. Find the sum of these two value only. So the values are very easy. 145. So 145 meter 20 centimeter and another is 30 meter 4 centimeter. Okay. So quickly do the sum of this everyone and tell me the answer. जल्दी से. This should not take so much of time. उतना टाइम नहीं लेना चाहिए. आप सिंपली बहुत जल्दी से बना सकते हो. मीटर सेंटीमीटर, राइट? तो मीटर में हमारा 145 है, सो 145. सेंटीमीटर में 20 है, सो 20. देन मीटर में 30 है, सो 30. एंड मीटर में 4, सेंटीमीटर में 4 है, सो 4. अभी हम लोग को ऐड करना है. तो 20 plus 4 is 24 and 5, 4 plus 3 is 7 and 1. So 175 meter and 24
सेंटीमीटर। किसी का आया आंसर? ओके, बहुत बढ़िया। प्रिंस, तृप्ति, पुनीत, खुशी, करेक्ट आंसर 175 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। So very easily this is how most important thing is the arrangement of the number. यहाँ पे 30 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर है, that doesn't mean कि आप यहाँ पे 4 लिख के 0 and 3 यहाँ पे लिख दोगे. If you do like this then it will be your mistakes. Okay, so this is the addition part which is related to the question number 4. Now let's move to the next question which we have, that is question number 5, which is related to the finding difference. So now we will see how we can find the difference. Okay, question number 5. It can ask like this, to find the difference between this, or simply it can be like do the subtraction. So here it is like subtraction. So it is written subtract. So let us take an example. So third one I am taking only. So the question is 37 meter 40 centimeter from it is given means the later number what we have, that from that we have to subtract this much. Okay, so 50 meter and 30 centimeter, 50 meter and 30 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जो वैल्यू बाद में है, that from that you have to subtract this much. तो यहाँ पे ज्यादातर गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पहले इसको लिख के उसके ऊपर ये लिख के सब्ट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं, जो कि नहीं हो पाता है. ठीक है, सो फ्रॉम दैट इट इज आस्किंग, सो फ्रॉम दैट मींस दैट फर्स्ट वी विल राइट. सो यहाँ पे हमारा मीटर एंड सेंटीमीटर है, तो मीटर में हमारे पास 50 है एंड सेंटीमीटर में 30 है, और यहाँ पे मीटर में 37 है एंड सेंटीमीटर में 40. ठीक है, तो विल डू द सब्ट्रैक्शन एज लाइक द नॉर्मल सब्ट्रैक्शन ओनली. ओके, सो 0 0 is 0, here 3, so we need to take one carry, so it will be 13. So 4 plus how much is 13? 4 plus 9 is 13, right? So this is 10, then 9 it will be. So 9 means 7 8 9 2. Okay, then this is 4, so 3 plus 1 is 4. So 12 meter and 90 centimeter. So the difference of this is coming 12 meter and 90 centimeter. So this is how very easily you can do the subtraction. इस तरह से आप जो है subtraction कर सकते हो. ठीक है, 12 meter and 90, not 19, it's 90. अभिनव राज, 19 कैसे आ रहा तुम्हारा? 30 से यहाँ पे 0 0 it will be 0, this will become 13, और अगर 13 होता है तो 4 plus 9 is 13 ना. So 9 1 9 19, how it is coming? Khushi is correct. 12 meter and 90 centimeter. Okay, Divyansh, why your video is off? Tripti, Aditya Raj, Prince, Khushi and Ankit. Okay, so I hope now you can do the rest of all subtraction. Okay, but still let us give one questions to you to do the subtraction by yourself. If we are talking about the word problems, question number 6 and 7, let us first explain the two questions, because these are word problems, maybe you face problem. So question number 6 is saying there is a bucket. Okay, so a bucket has 12 liters 50 milliliters of milk. Okay, एक कुछ वेसल्स है, बकेट है जिसमें मिल्क है. ठीक है, मिल्क रखा हुआ है कितना? टोटल 12 लीटर एंड 50 मिलीलीटर, आउट ऑफ विच 8 लीटर एंड 250 मिलीलीटर ऑफ द मिल्क यूज. उसको 8 लीटर जो है, 8 लीटर और 250 मिलीलीटर हम लोगों ने यूज कर लिया कुछ बनाने के लिए. ठीक है, मिठाई बनाने के लिए, स्वीट्स बनाने के लिए. सो हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट in the bucket? So this is also subtraction. So quickly do the subtractions of this, everyone, and tell me what will be the result. The values are 12 liters, 50 milliliters. You have to subtract 8 liters and 250 मिलीलीटर. तो आपको जो है इसमें से
इतने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे भी देखो 3 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इसको सबसे पहले 3 डिजिट बनाने के लिए हमें इससे पहले 0 प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शंस करने हैं, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे मिलीलीटर है, ठीक है। तो लीटर के केस में हमारे पास 12 है और मिलीलीटर के केस में हमारे पास 50 है। यहाँ पे लीटर का केस में हमारे 8 है और यहाँ पे मिलीलीटर का केस में 250 है। तो यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है तो हमें एक 0 लिख लेना है, ठीक है, ताकि ये भी 3 डिजिट का हो जाए और हमें सब्ट्रैक्शन करने में इजी हो, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। So after subtracting, check how much is coming. Whatever it will come, that much milk will be left because हमारे पास total milk जो था ये इतने था 12 लीटर एंड 50 मिलीलीटर और उसमें से हमने यूज कर लिया 8 लीटर एंड 250 मिलीलीटर, राइट। सो यहाँ पे अभी सब्ट्रैक्ट करिए 0 0 0 0 5 5 0 2 प्लस 8 इज 10 बिकॉज यहाँ से एक हमने लिया है तो इट विल बी 11, so 8 plus 3 is 11, right? So 3, so 3 liter and 800 milliliter milk will be left. So 3 liter and 800 milliliter will be the answer. Okay, so this is how we can do the subtractions. इस तरह से हम लोग subtraction कर सकते हैं, ठीक है। सृष्टि एंड अंकित, understanding? Okay, so one more subtraction or addition or what, let us see question number 7. Question number 7 is asking कि a watermelon weighs this much gram, another watermelon weighs this much gram, so estimate the sum. So this question is related to the estimation. So first you have to estimate the number, the sum of the weights of 2 watermelon in terms of the nearest 100. तो सबसे पहले आपको estimation करना है इसको. So we have learned in this chapter related to the estimation also. So we will see how to estimate the number, or we have seen also. Okay, so for example 2448 gram, 2448 gram, so 2448 gram one weight is given, another's weight is given 3309 gram. So it is asking to estimate the sum to the nearest 100. So we'll round off this number to the nearest 100. So rounding to the nearest 100. So the same thing, we will do the rounding of this number to the nearest 100. So we know how to round off to the nearest 100. नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग को पता है कि 100 प्लेस के बाद वाला जो डिजिट है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा बताइए, 2400, राइट। 100 का राउंड ऑफ अगर इसका करने जाएंगे 2448 का तो 2400 आएगा, राइट। Okay, and what will be the rounding of this number to the nearest 100? Tell me everyone. 100 plus 3 है, 3 के बाद 0 है, so definitely 3300 हो जाएगा इसका. So 3300 ग्राम, ग्राम लिखना मत भूलिएगा, यूनिट है ये. Okay, after then we will find the sum. So now sum is equal to 0 plus 0 is 0, 0 0 0, 4 plus 3 is 7. And 2 plus 3 is 5. So the answer is coming, rounded sum is equal to 5700 grams. So finally you will write like this, कि the estimated sum is equal to 5700 gram. So 5700 means 5 kilogram and 700 gram. So either you can write 5700 gram or you can just convert into kilogram and gram and you can write this. After then 2 value based questions are there that we will discuss later on. You just try to solve by yourself value based questions also. Okay, so till now if anyone having any doubts you can ask. ये question number 7 है. This is question number 7. Okay, so till now your homework is to do the word problems of the value based questions also and miscellaneous exercise also, because you have done
yesterday till question number 3. So now I hope you can do today 4, 5, 6, 7. और कल अगर किसी को डाउट्स हो तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का जो क्वेश्चंस 2 है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो योर होमवर्क इज टू डू क्वेश्चन नंबर 5, 4 to 7. एमई चैप्टर 10, एमई चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 7 तक आपका होमवर्क है, ठीक है. Okay, thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.